जैसे हिंदी के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, 39.5 आया था आउट ऑफ 40, तेरा जाने हिंदी है तो क्या ही होता है ना। तो मैंने 4-5 दिन के स्पैन में मैंने आराम से फिलअप किया 5 में से 2 हुए बिना छोड़ा कोर्स था आपसे बैठने में किया लेकिन आज की लाइफ बहुत हो रहता है कम कर लेती और देखना थोड़ा कितने मार्क्स को तुम्हारा 80 और हमारा हाफ ईयर 68 260 हमारा बचना बंद रहता अगर तुम एक टीम में फेल हो तो ज्यादा होगा एक टीम में हाँ एक टीम में तुम्हें मतलब 15 आ गया और 40 पास हो गया दूसरे में तुम्हें 100% आ गया तो तुम बाकी दूसरे में बस पास कर लो चलता है अभी अभी सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम की बोर्ड में भी 2 बार एग्जाम होता है उनका प्रैक्टिकल एग्जाम अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी बोलिए ऐसे पता है बायोलॉजी करके चीज क्या था उसमें बेसिकली कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं क्वेश्चन पूछते हैं उसके बेसिस पे अगर तुम सही दिया तो फिर उसमें पार्शियली करेक्ट होता है फुल्ली करेक्ट होता है हाँ उसके लिए वो तुम्हारे स्कूल का हमारे नेगेटिव बायवा का मतलब ये होता है कि सीबीएसई बोर्ड से लोग आते हैं बच्चों का अभी नहीं वो 10th में होता है तो बच्चों का अच्छा वैसा हाँ 10th 11th 12th में होता है बच्चों का क्वेश्चन करने आते हैं हमसे कोरल क्वेश्चन तो मैंने सोचा कि हमारी आईटी की मामले में इतना वाइवा कैसे है और मुझे समझ में आया पिछले स्कूल में क्या होता आईटी के लैब में बैठा था बोलते हैं हाँ कि जा रहा ये ऐसे रहते हैं हम बोला कि ये कुछ भी तुम करो और बीच में रोल नंबर कितने 5-6 रोल नंबर बुलाती उनसे कुछ अब
कुछ भी नहीं, जो चीज कहती कि ये करना है तो वो करो, बच्चे बुक लेके आ जाते हैं। चैट जीपीटी में डाल देना भाई, चैट जीपीटी कौन सा प्राइवेट वो सर्च करने वाला है। और हमारी अब पिछले साल की हम मुझे पता नहीं तो थोड़ी सी और चलता है किसी कंप्यूटिंग कॉम्पिटिशन में और मेरे दोस्त विदाउट हेजिटेशन चैट जीपीटी खोला, पूरा कोड पहुंच किया एंड गेस व्हाट, हम लोग सेलिब्रिटी हो गए। फिर वहां पे गए थे तो खोला, फिर उसके बाद एक और चीज हुआ, इसमें भी मैंने अपने सस्ता छापा। फिर उनसे बोला कि तुम करो क्या ये पैसे मिलेंगे, ये मैं कहा नहीं, तो मैं वहां पे थोड़ा छाप 5-6 बच्चों के सामने ओरल स्लिटी में एक बच्चा के ग्रुप में स्मार्ट हुआ, मतलब एक रोल नंबर तो आता ही है जिसमें सारे बर्बाद लोग हैं, मतलब एक बैच के साथ होता है तो इस बैच की मदद करने के लिए जो आप है ना मेरी मम्मी तो और मैं वही क्वेश्चन फिर से और हम लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है, 40 मार्क का होता, 40 मार्क के एग्जाम में कौन से हमने बुक ले क्या, हाँ बुक लेके आ गए थे और फिर बुक से लिख रहे थे कि भाई मतलब ये वाली चीज पूछी है, ये मत करो ये ऑडिट 2 के टाइम पर हुआ जो कि दे सिस्टम की Sorry for delay. Actually, right from morning, my all your complete schedule is running very late, slow. Done. Online है क्या? नहीं है. So last time we have completed, I think this part of how to write formulas. So you are done with that part now. How to write formulas. Then next is molecular masses and mole concept. These two things we have to complete. Then quickly take your notebook out. Write one heading. I think today we will complete the step. Attention molecules. Two things we have to complete. Molecular mass and mole concept. It's very easy to find out molecular mass. Many times we have done for simple molecules right now. So with simple example, we will start. The simple example is of water. What is formula of water? H2O. H2O. Water. Okay. When we are saying formula, it is nothing but our molecular formula. So molecular formula of water is H2O. Right now, next thing we have to calculate molecular mass. So molecular mass, how to calculate? 2 into atomic mass of hydrogen. Okay, as 2 atoms of hydrogens are there, plus how many oxygen atoms? Only one. 1 into atomic mass of oxygen. Okay, this is a basic formula. Whatever molecular formula you have, आगे अब क्या तुम्हारे लिए कहाँ थे? गणपति को बना रहे थे, हो गया डन? You are busy with गणपति. गणपति में busy थे? अच्छा चलो, आपका फेवरेट वाला टॉपिक आ गया. Molecular formula and mole concept. Okay. So first write down molecular formula. Then whatever is a number of atom, that number into atomic mass of hydrogen plus number of another atom into the atomic mass. So here comes out 2 into mass is 1. Last time we have calculated masses with that rough equations also. Do you remember for E1 and R? But remember it is only for rough estimation. आपको direct answer नहीं मिल रहा है उसमें से. Plus atomic mass of oxygen
कितना है किया है आपने 16 so this is equal to 2 plus 16 which is equal to 18 right this is the atomic mass and method to calculate now few example and quick first one is CH4 second one now it will be more better methane then ammonia then every time which one we are using carbon dioxide carbon dioxide and और कौन सा हम यूज करें ज्यादा ozone we are not using this NaCl oh my god okay NaCl also do it will help us NaCl अभी हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना इसका यहाँ पे NaCl दिया है क्या हो गया कुछ चाहिए you have to find out molecular mass of this compounds all these compounds all molecular I think mass atomic masses we have done last time no you can take reference of that इनका आपने किया अटेंडेंस be fast girls start doing now methane ammonia formula of methane what is formula अच्छा तो बोलो ना कब बताओगे क्या है फॉर्मूला मीथेन का नहीं पता मीथेन इज CH4 अमोनिया NH3 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वो तो आपको सबको पता है बराबर है ना चलो फटाफट करो बेटा बोलना रहता है ना मुझे कैसे समझ में आएगा atomic mass of carbon 12 hydrogen 1 it is there okay then for nitrogen atomic mass 14 then carbon 12 oxygen अभी जस्ट हमने किया है चलो जल्दी जल्दी करो one more difference you have to identify है ना पहले कर दो पूरा what you are searching क्या चाहिए मुझे बता मैं बोलती हूँ
What you need? Nothing. Chalo, it is very easy. What is molecular mass of methane? It is not given in our book. Yeah, 16. Okay, good. Next one. For ammonia, molecular formula is CH4 and molecular mass 12 and 4, 16, right? Then for ammonia, ऐसे orally भी कर सकते हो, very simple example. Nitrogen 14, right? 14 and hydrogen 3. 17. Okay. So 70. Then for carbon dioxide, 44, 12 plus 16 and 16, 32, 32 plus 12, 44, right? Then next one, NaCl. NaCl हो जाएगा तो NaOH भी कर लेना. Na mass, atomic mass of Na 23 and Cl last time हमने किया है Cl 35.5. So it comes out 50. ये बच गई 50.5 NaOH. Very simple. And you have to use NaOH in your 10th standard, 11th standard, 12th standard of ऐसे मत बोलना हम साइंस से. But 10th में तो देना at any cost. NaOH. हो गया? Sodium, then carbon, oxygen and hydrogen. Atomic mass OH के लिए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ एटम्स आर देयर. उनका क्या करना है? सबका सम करना है. ये सारे एटम्स का एटॉमिक का सम करना है. 23, 16 and 1, it is 40. Right. Answer is 40. हो गया? Done. So molecular mass, it is what? Molecular mass, it is sum of the atomic masses of the atoms of the different element present in the compound. Right now, boys, molecular mass means what? Sum of the atomic masses of the atoms of the different element present in the compound. If you have more than one atom, just multiply that atomic mass with that number. This will give you molecular mass. Now this molecular mass concept is here. Only in this we have ionic compound is our NaCl. Many times we have used that ionic compound for different example. Methane, ammonia, and और एक कुछ मैंने दिया था क्या? Water molecule. These are the covalent compound. Now let us go for the next part. यहाँ पे और एक चीज सी देखो, formula unit mass. Now this formula unit mass normally it is considered for ionic compound. Okay, otherwise you can directly go for the molecular masses. Normally molecular masses are asked. Then next is the mole concept. Now many of you are facing problem with the mole concept. ये मैंने आपके सेंटर में नहीं, मैंने बहुत यहाँ पे सुना है. तो अपनी सारी चीजें एक साइड में पहले रख दो. सब कुछ मत रखो. Keep your mind free. पूरा completely open so that mole concept will go inside your brain. Or mole concept again, it is very important for your this class as well as for next class calculation part में and even for 11th standard. Done? Or okay. Now whenever we are purchasing any material,
For example, I am there out for uh, purchasing pen. Okay, मुझे एक दो में नहीं चाहिए. I want in dozen, 2 dozen. Okay, तो मैं क्या बोलूंगी, मुझे एक डजन मार्कर दे दो कलर के साथ. Right now, for example, I am asking for 1 dozen, then it will correspond to which number? 12. Okay. तो अगर मैं डजन बोल रही हूँ तो then there are 12 units. 12 units, पूरा 12 units है उसके अंदर, मतलब 1 2 3, एक एक पीस 12 ऐसे पीस है. Then if I am going for 1 liter of, for example, water, 1 liter of water, तो इसमें ml के कितने यूनिट्स है? 1000. 1 unit, it will correspond 1000 such unit will combine to form 1 liter. देखो बराबर है. Any doubt in this? If I say मुझे ना 40 किलोमीटर्स जाना है, 40 किलोमीटर्स, ये 40 ज्यादा पड़ा ना, तो 1 किलोमीटर. 1 kilometer means how many meter? कितना? 1000. पक्का. If I say 1 meter, 1 meter corresponds to कितना? 100 centimeter. 100 centimeter. So in short, in order to make a group, one complete group, I need a small unit in different parameter. If it is a dozen parameter, if it is liter, if it is meter, then I am using this small unit and collecting them together and making them together to make the total sum as 1 dozen, 1 liter, 1 meter. Okay? इसका मतलब ये है कि मेरे एक डजन में कितने यूनिट्स है? I have 12 units. For example, if you go with a simple reaction, H2 plus O2 giving HO2. If this is a simple reaction I have. In this simple example, I have made 2 moles of water. 2 moles of water. I have here 4 molecules. Sorry, 2 molecules of hydrogen, 1 molecule of oxygen, and instead of saying here, I will say here molecules of H2. बराबर है. Now normally the reaction which we are using in terms of molecules. We are using in terms of mole, but whether we have used in terms of moles. आपने इससे पहले कभी मोल्स वाले टर्म में रिएक्शन किया है? मोल्स वाले टर्म में एक मोल में कितने एटम? एक मोल में कितने एटम? ये हमने कभी किया है? नहीं किया है. बराबर है. इसके पहले हमने कभी नहीं किया. सो व्हाटएवर ग्रुप वी आर मेकिंग पर स्मॉल यूनिट. अभी ये पर्टिकुलर चीज है. आई एम सेइंग 2H2 plus O2. ओके, गिविंग ये रिएक्शन हमारे पास में है. दैट्स व्हाई वी आर गिविंग इन टर्म्स ऑफ, वी कैन से एटम. एक इतने एटम होने चाहिए. जैसे मैं इसमें आराम से बोल सकती हूँ, इट कंटेन 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 atoms of oxygen. But in terms of moles, I don't know what is a mole. In 1 mole, how many atoms are there? I am directly taking molecules. बराबर है ना? तो याद रखना, chemistry में always 1 mole of any substance, it is equal to the golden number, and this number is known as Avogadro number. And what is value of Avogadro number? क्या वैल्यू है? पता है आप लोगों को? हमने ऑलरेडी शायद स्कूल में हो जाएगा. व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस एवोगैड्रो नंबर? नहीं पता? नो. It is equal to 6.022 into 10 raised to 23 atoms. 6.022 into 10 raised to 23 atoms. अभी कैलकुलेट करो कितने सारे इसके आगे ऐसे जीरो लगाने पड़ेंगे.
से मिला के देखते हैं प्लीज। तो इतना सारा लिखना, don't you think it is time consuming? Instead of that, we can write a simple thing. Huh? So 1 mole of any substance, any substance, okay, it is equal to the Avogadro number, and that number is 6.02 10⁻³ एटम। उसके अंदर कितने एटम्स होंगे? ओके, नाउ इन आवर बुक लेट मी टेल यू व्हिच थिंग्स आर गिवन। फर्स्ट वन, खोलो ना उसको, आपके पास में है ना वॉल्यूम? ओके, चलो, इट इज ऑन पेज नंबर 46 मिला? मोल concept है, मोल concept. In mole concept, first thing, the reaction is given. The same reaction is given. Water formation reaction. बेटा बुक देख ले जरा, 46 है, page number 46. First reaction is given. Then next line see was dot bullet. 2 molecules of hydrogen. We know 2 molecules of hydrogen they combine with 1 molecule of oxygen is given. Then 4 unit. बराबर है ना? How many units we have of hydrogen? 4 unit. And how many units of oxygen? 2. बराबर है? छोटा छोटा 2 unit क्या हो गया? इतना नहीं आ रहा है देखो. 2 units of oxygen we have. Right? Now further it is classified, simplified into the masses. So according to masses, what will be mass of hydrogen there? Total mass कितना होगा? 1 का 1. So 4 corresponds to 4. Similarly, what about hydrogen? So oxygen, it will correspond to 32 units. यहाँ पे this 1 into 4 and this 2 into 16 बराबर है. So this will 2 and 16. हर एक टाइप में उसने एग्जांपल दिया है. In number of atom, number of molecule, atomic masses. Now from this it is clear that nowhere we are giving reference of the atom. कहीं पे आया है atom कितने हैं? नहीं. Next line देखो, 1 mole of any species, underline it. बेटा consider. जल्दी जल्दी हाँ. आप अपने बुक में लिखो. Write in your book. 1 mole of any species, atom, molecule, ion, particle. It can be atom, it can be ion, it can be molecule, it can be particle. Is that quantity in number having mass equal to its atomic or molecular mass in gram. Atomic or molecular mass in gram. Put full stop. The number of particles present. Bracket में देखो, लिखा number of particles, atoms, ions or molecules. So your reaction it may be in the form of atom, it may be form in the molecule, it may be in the form of ion. पर जो भी कुछ आप ले रहे हो उसमें it is equal to Avogadro number. If the number of particles, bracket, atoms, molecular ion present in 1 mole, you are doing now, in 1 mole of any substance is placed with the value is very simple to remember. 6.022. 22 हो गया into 10 raised to, and this value is again positive value. आपको divide करके reduce नहीं करना है. It is a positive value. Then write down this number is called Avogadro constant or Avogadro number. Avogadro constant or Avogadro number. यहाँ पे मैंने Na लिखा है. Okay, in class 11 it is Na. In your book it is given N0 and not
आप Na के साथ में भी चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, आपके मार्क्स कटेंगे। हो गया? This number is called Avogadro constant or Avogadro number presented by N naught and naught, and under that see one example is given. 1 dozen is equal to 1 dozen is equal to 12 number. 12 number means in short it is 12 unit, and 1 cross is equal to 12 into 12. बराबर है ना? 12 plus 12. What is the value? 144. Whether this number is going to change, if I say 1 dozen, then how many units are there? 12. If I say 1 cross, how many units are there? 144 unit. बराबर है ना? So this number is constant, it is not going to change. Similarly, when we are saying 1 mole of the compound, 1 mole of the substance, then that 1 mole of the compound, 1 mole of the substance, that substance may be your atom, that substance may be your molecule, that substance may be your ion. But that value is fixed value. And how much it is? How much it is equal to the Avogadro number. What is that number? 6.022 into 10 raised to 23. 23 याद रखो, 6.0 is very easy number. याद रहेगा ना? How many sense organs we have? Sensory organs? 5. उसमें और एक डालते हैं 6. याद रखो. हाँ? चलो. Then next time, besides being related to the number of moles, one mole more advantage over gross. Disadvantage is that the mass of 1 mole of the particular substance is fixed. अभी now we are not talking in terms of gross. इसमें बात कर रहे हैं हम लोग नहीं ना, we are talking in terms of atom, in terms of molecule, in terms of ion. So can we go with this particular unit? 1 gross, 1 dozen, 1 liter, 1 क्या क्या मैंने लिखा वैसे जा सकते हैं? No, because we are talking in terms of reaction. बराबर है ना? In terms of reaction. So what we need? We need 1 mole of any substance, and our substance may be चीजें बताइए ना, atom, molecule और ion. चीज आप याद रखो, atom, molecule और ion. Then next, the mass of 1 mole of the substance is equal to the relative atomic or molecular masses in gram, and the atomic mass of the element gives us the mass of an atom or element in one atomic mass unit. ऐसा ऐसे बहुत बनाया है, आप ज़्यादा ओपन इसके अंदर नेक्स्ट टाइम देखो क्या बोला है. For example, atomic mass of hydrogen is equal to 1 unit. बराबर? क्या वैसे what is it? 1 unit. So gram atomic mass of hydrogen is 1 gram. एक छोटा वाला यूनिट उसमें से लिया है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इतना ही लिया है. हाँ, मैं क्या यहाँ पे 1000 वाला करेंगे. kg is equal to 1000 gram. 1 kg is equal to 1000 gram. Okay. So here 1 small gram, they are joined 1000 times. Okay. This 1 gram, it is nothing but 1 atomic mass unit. ठीक है ना यहाँ पे? बराबर है? करेक्ट है? देखो यहाँ पे फिर से देखो 1 kg is equal to 1000. बराबर? So 1 into 1000 I will go. This will give me 1000 gram. 1 into 1000. 1 gram into 1000 will give me 1000 grams. Now this 1 gram, it corresponds to 1 atomic mass unit because it is the smallest part. ये हजम करो जल्दी हजम करो. kg वाला example is the best. Okay, when we are saying 1 kg मतलब कितना होता है? 1000 grams. Okay, so what we are doing, we are multiplying 1 into 1000, 1 gram into 1000.
1 gram into 1000. 1 gram corresponds to 1 atomic mass. तो एक atom में वो. It is only the one atom mass unit. Okay, ऐसे हम 1000 times करेंगे. Then you will get 1. Similarly, 16 unit oxygen has, how many it has? 16 unit oxygen, how many atoms? 1 atom. Only 1 atom. बराबर है ना? 16 unit oxygen has 1 atom of oxygen. And 16 gram oxygen has 1 mole atom. वो relation right on that relation. Right on that relation. 16 unit oxygen has 1 atom of okay atom करो हाँ 80 करके छोड़ना मत 1 atom of oxygen 16 gram oxygen has 1 mole of atoms 1 mole of atoms and 1 mole of atom it corresponds to 1 mole of atom is corresponds to 6.022 into 10 raised to 23 yeah atoms बराबर है ना atoms of अभी यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया atoms of hydrogen लिखा but it is not atoms of hydrogen it is atoms of oxygen तुम्हारे वॉल्यूम में चेक करो मिला क्या 16 gram of oxygen has 1 mole of atoms that is 6.022 into 10 raised to 23 grams of hydrogen. Hydrogen से इक्वेट ही नहीं करना है उसको. Grams of oxygen it is. Then next point. To find the gram molecular mass or molar mass of a molecule with numerical value of some of the molecular masses तो आपको पता है. We can convert unit into gram. For example, what is given? We have calculated the molecular mass of water. देखो हमारा हो गया. 1 molecule of water 18 gram has 1 mole water molecule. हमने 18 grams किया था ना? 18 grams corresponds to as per this equation. 18 grams corresponds to 1 mole, and that 1 mole corresponds to this many atoms of that. Similarly, 16 grams corresponds to 1 atom. एक कोई तो standard equation use करो. Either you go with this one or you go with this one. But remember, 1 mole it is corresponding to this many atoms of that substance. Okay? जैसे हमने देखने का calculate किया कि molecular mass 16 है. हाँ, 16 मतलब वो एक होगा और फिर एक molecule में you have 16 units of oxygen. Huh? And that 16 units of oxygen they corresponds to has only 1 atom of oxygen. देखो यहाँ पे क्या दिया है? Unit oxygen has only हाँ और नीचे 16 gram of oxygen has 1 mole atom. It is equal to 1 mole of atom. And that 1 mole it is equal to 6.022 into 10 raised to 23. 16 is equal to gram. 16 gram. Of the 16 मतलब 1 mole. It is equal for oxygen 16 gram. It corresponds to 1 unit. It corresponds to Avogadro, which is 1. It is for 1. किसी भी molecule का किसी भी आप कुछ भी ले because for reaction है ना हमको ये reaction दिया है atoms are more equal और अगर दो तो उसका भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसका भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अभी नॉर्मली हाउ वी आर डूइंग ना इन हायर क्लासेस masses are given for example it will be in this way calculate the number of moles अभी तो हम लोग यहाँ पे क्या करें number of moles के लिए
अगर एक बात मुझे बताओ, here we have taken only 1 mole of oxygen. बराबर है ना? So instead of 1 mole, if you have 2 moles of oxygen, तो आप क्या करोगे? For 1 mole of oxygen, what is value of Avogadro number? 6.02 into 10 raised to 23. Then what will be value for 2 moles? Multiply by 2. Understood now? So problem ऐसे रहता है, calculate the number of moles in the given reaction. आपको क्या करना है? Looking at the reaction, you have to write down number of any problem is given here. Solve example. ये थोड़ा फटाफट चेक करो तो आपको इजी हो जाएगा आंसर चेक. You have your textbook with you. Now let's see here. Question number 11. Calculate the molecular masses. मिला? Question number 11. In that इसमें question में CH4 is given. We have already completed. Underline करो. Then NH3 is given. है ना? हमारा already हो गया है ना? You know ना how to calculate. Now in 10 number, how many atoms are present in the molecule? Just number of atoms are asked. So how many atoms are there in H2S? Total तो दोनों के ना बहुत जल्दी. Continuous nails by teacher है दोनों का. खाना पानी हुआ नहीं तुम्हारा. How many atoms are there? Total atoms in H2S. Question number 10A. कितने आइटम्स है? आंसर मत देखो, ऐसी कुछ आंसर होगा. How many atoms are there? And one of sulfur. Total atoms 3. In next one, PO4 3 negative. How many atoms are there? Formula is very easy. PO4 3 negative. कितने? ऑक्सीजन का 4 और फॉस्फोरस का 1. Total is 5. कोई क्वेश्चन पूछा है. Then next one. Calculate the formula unit masses of ZnO. ये सब किया है. This is for ionic compound and the method is one and the same. Okay. For exam, for the higher element, teacher will provide you with the atomic masses. Lower वाला simple वाला क्या detail बोलिए. Now next problem देखो. If problem ध्यान से देखो, it is very easy. If 1 mole of carbon, okay, how many moles? 1 mole. 1 mole corresponds to, you know that it corresponds to which number? Atom weighs 12 grams. If 1 mole, it corresponds to 12 grams. What is the mass of atom of the carbon? Problem थोड़ा पलटा करके दिया है. Atomic mass of carbon is 12. Okay. जरा यहाँ पे atomic mass of carbon is 12. Now, as per the solution, please write solution answer देखो. 12 grams of carbon. जरा एक full stop. Both the equation I have written. 16 grams of oxygen corresponds to 1 unit of oxygen. लिखा है मैंने बराबर 1 unit. That further it is equal to 6 point Avogadro number. Now go back in your book. देखो हाँ, grams we had equalized it with unit बराबर and further with 6.02 into 10 raised to 23. देखो बोर्ड पर वैसे ही है ना, in the left side में 60 gram corresponds to 1 unit. Next line, it corresponds to Avogadro number, which is 6.022. Correct? Any doubt in that? Not in our problem. How much amount is given? 12 gram. 12 gram. So 12 gram is 12 unit. It will corresponds to
that number, one mole means that number. Now further equation is that number. So in our book it is given per gram of carbon contains 6.02 10 raised to 23 atom बराबर है. All agree with this one because it is given. ये मैंने नहीं बनाया है. It is given. Gram correspond to unit which correspond to Avogadro or which corresponds to volume. करना क्या है हमको मास फाइंड आउट करना है. यहाँ पे मास फाइंड आउट करना है which is I think given. क्या बोला है what is the mass for of one atom. One atom हमने atoms of बोला है. कितने एटम से हमको पता नहीं है. उसके अंदर एक एटम में कितना रहेगा. इट इज लाइक दिस. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करते हो ना. 12 gram is equal to Na atoms. Okay, so one contain how many. ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला है. 1 ग्राम एक एटम में का मास कितना है वो आपको फाइंड आउट. प्रॉब्लम समझा. Understood? Sure? Okay. So see here again. 12 unit corresponds to one atom. Okay. So 12 grams, it corresponds to 1 mole, which is Avogadro number. यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट करके उसने बोला है 12 ग्राम. Okay, दिया है. कितना दिया है 12 ग्राम. So 12 ग्राम we know 12 gram means how much it is Avogadro number. So it will be Avogadro number of atoms. कितने atoms वहाँ पे होंगे. बहुत सारे हैं. Big number. तो one atom का mass कितना. That you need to calculate. So 12 into 1 divided by Avogadro number. See, this is same way or different. 12 upon Avogadro number. वैसे ही है. This concept is clear. So what is value there? It is done. Solve example. What is value? थोड़ा सा दिमाग यूज करना है. It is 1.99 as 23 is in denominator. That side you will take it numerator. बराबर है. Negative will be converted into positive. Then next one. Next is calculate the molar mass. Can you calculate molar mass for C2H5OH? Very simple. Without we will do it quickly. करो करो जल्दी करो. अपने बुक में सॉल्व करो. C2H5OH. बेटा करो सॉल्व करो. आंसर कॉपी मत करो. देखो प्रॉब्लम नंबर 21. What is the mass of? Okay, mass पूछा है. 1 mole of nitrogen atom. 1 mole of nitrogen atom. Answer मत देखो. 1 mole of nitrogen atom. What is formula? 1 mole of nitrogen. हमने किया था. मास फाइंड आउट किया था ना हमने. कितना आया था. अभी के हमने शायद अमोनिया के लिए नाइट्रोजन को यूज किया 40. So आंसर क्या आएगा वहाँ पे 40. Then 4 moles of ammonium atoms. 1 mole aluminium atoms. 1 mole is 27. 4 moles कितना होगा. कितना होगा. 1 mole का दिया है यहाँ पे. Atomic mass of aluminium is 27. So 4 into 27. 10 moles of sodium sulfide.
10 moles 1 moles का दिया है ना तो आपने दिया है मासेस दिए हैं आपको नहीं दिए मासेस सोडियम का नहीं दिया देखो Na it is 46 बुक में देखो 46 में 23 and 23 बराबर सल्फर 32 this is correct oxygen 8 कितना 16 into 3 48 बराबर है राइट बस आप लोगों को ये समझा नहीं समझा रहेगा तो लिख के ले लो Na atomic mass is 23 better write in your book sulfur it is 32 then oxygen mass is 60 एक atom लेगा oxygen molecule which is diatomic last time we have done na atomicity do you remember atomicity means what number of atoms present in that molecule convert into moles it is said convert into moles 12 gram of oxygen gas oxygen gas what is formula oxygen gas O2 so what will be molecular mass क्या बोल रहा है O2 हाँ मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा O2 का what is formula just now we have completed the molecular mass sum of the atomic masses हो गया कितना ऑक्सीजन का atomic mass how many atoms you have so what will be molecular mass 32 समझे करूँ मैं समझा अंडरस्टूड क्या समझे और ओजोन का कितना आएगा हाँ ओजोन what is formula of ozone last time we have done ozone so you remember ozone last time we have done now what is formula O3 so what will be atomic mass of O3 16 into 3 48 right यहाँ पे देखो 12 grams of oxygen gas given mass कितना है given in the problem how much is given 12 grams okay so given mass यहाँ पे equation लिख के रखो आपके बुक में conversion वाले के लिए moles is equal to given mass upon molecular mass right in your book for conversion problem given mass upon molecular mass. This type you can use for calculating moles. ये वाला important है यही मैं तुमको बताने वाली थी लेकिन ये तुम्हारे क्लास given mass upon molecular mass. Then next go for water. Without looking try to solve it 20 grams of water. Solve for 20 grams of water. देखो मास दिया है फ्रॉम मास वी आर फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स बराबर है ना कन्वर्जन जरा ध्यान से देखो हाउ यू आर कन्वर्टिंग इट प्लीज आंसर कॉपी मत करो equation write down the equation given mass upon molecular mass so what is the given mass and the 20 and molecular mass is 18 answer reduce karo you will get answer in decimal point answer is 1.1 अभी without looking at करते turn that page everyone please turn that page
44 grams of carbon dioxide. 44 grams of carbon dioxide. One, okay, next one. Next one, 23 page number. What is the mass of? You have to calculate mass now. So problem is 0.2 moles of oxygen atom. 0.2 moles of oxygen atom. Moles is given. Page number 50. 0.2 moles of oxygen atoms. अच्छा जब किया कैसे I want that 0.2 moles of oxygen atom, so 0.2 into molecular mass. Answer is 3.2. Next one is 0.5 moles of water molecule. Given moles into molar mass. Okay. So you are doing conversion. You are doing conversion. You are doing conversion of moles to mass. बराबर moles mass conversion कर रहे हो in order to convert mass into mole. What you are doing? Multiplying it by molar mass. Multiplying it into molar mass. देखो बराबर से. Just now we have converted. क्या find out किया है? What is the mass? हाँ, एक मिनट. When you are converting moles into mass, you are doing multiplication with molar mass. जो moles रहेंगे into molar mass. And when you are converting mass into molecules, you are dividing it by molecular mass. इसके पहले वाला आपने किया था. देखो बराबर से check करो. We convert into moles. Mass was given. We have divided by molar mass. Mass was given. We have converted that mass by molar mass. So you will get moles. Moles can be converted into mass by multiplying by molar mass. मोलार मास यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था ना फॉर एग्जांपल सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स ऑफ द गिवन यूनिट. हाँ मोलार इसका मोलार मास मोलार बस फिर हम लोग को जी में करते हैं. हाँ से नहीं करना है और कुछ मास में ग्राम करना है. अदरवाइज यूनिट एटॉमिक यूनिट वाला यूनिट. चलो ये रिलेशन लिख के लो एवरीवन. आई हैव रिटन इन योर बुक. Next one, calculate the number of molecules. Number of molecules of sulfur present in 16 gram of sulfur solid sulfur. Calculate the number of molecules. In definition part we have written atoms, ions, molecules. Do you remember that definition? 1 mole of any substance is equal to atomic number. That substance may be atom, ion or molecule. Definition में आज से finish करना है. So formula mass of sulfur is SA. Okay. Atomic mass of sulfur is 32. Just now we have that 32 into 8 will give you
the complete molecular mass of sulfur. Sulfur single ही है, but it is polyatom. I think last time we have done this. Sulfur को polyatom में नहीं डाला, poly डाला था ना उसको. So sulfur is polyatom. Now again see what is asked in the problem. Calculate the number of molecules. Number of molecules. So how we can proceed for this one? ऐसा क्यों ना ओके वो तो सब समझ गया पर ऐसा इक्वेशन 60 grams is corresponding to 16 upon 253 into 6.022 10 raised to 23. Now since from beginning the problem which we have done for calculating the mole क्या हमने लिया था given mass upon molecular mass. So as per the problem, given mass of sulfur is 16, molecular mass is 256 into Avogadro number. Okay, थोड़े इससे practice करो problem अच्छे से क्योंकि problem है simple but थोड़े आपको complicated लगेंगे. Okay, so we have completed this topic. What is next? Done now. So on your class, it is done. Okay, all the best. Let us see फिर अलग करते हैं तो otherwise तो देखो एक बार बोल सकते अच्छे से अगर नहीं समझेगा तो but I don't think this topic is able to come in some. तो break it will take time to do lots of practice. इसे आपको भी break. Definition problem. What about mole concept? आएगा अभी नहीं आया तो फाइनल में जरूर मोल कंसेप्ट आएगा लेकिन उसमें सारे प्रॉब्लम सॉल्व अनसॉल्व है ना सॉल्व दे आर नॉट डिफिकल्ट रिमेंबर द फर्स्ट थिंग दिस वन एंड दिस रिलेशन इसके बाद ज्यादा नहीं आएगा चलो बाय ऑल द बेस्ट आज फाइनली लास्ट चिल्लाया सबसे 2 घंटा कुछ आता था हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे कौन सा आया की बात हुई थी अरे वो थोड़ा उधर पड़े लगा तो क्या लगता है सही देखने वाले का शीट खराब है फॉर्मूला ही खराब है चिल्ला रहा है अबे तो कोई आंसर पूरी क्लास में 3 बार एक्सप्लेन करने के लिए किसी कोई आंसर नहीं दे रहा क्या